Hello guys, I hope all of you are doing good and so we start in here with our chapter of annuity, which is for applied maths CBSE grade 11. Well, annuity is actually a very realistic, a very practical kind of word, and the thing that you will always even hear in the market nowadays. It's not something that which you don't experience. This is the most in what to say, it is always the most in thing about investments, about everything that people are talking about. Let's understand more about what is annuity. Okay, now when we talk about annuity, annuity is a fixed sum which is payable periodically at equal intervals of time under certain conditions. Correct? That means what? That means you invest a certain amount of money for a couple of years and you keep getting some returns out of it, or you pay some amount to, maybe you have taken loans, so you take a lump sum amount from the bank and you keep on paying the installment. So all this is a form of annuity. All right, so as I said, one thing that we all experience about annuity, or we everybody will know about annuity, is insurance is the most common thing. So normally people, what they do, all of you have heard about something called medical insurance. Correct? Kya hai medical insurance? Medical insurance means you keep on putting money. Today you are not sick, fine, but you will keep on, kind of investing in your medical insurance, some fixed amount every year, every 6 months, every quarter, every month, depending on the time period. And one day, unfortunately, God forbid, if you are sick and you have to make a major surgery, or you have to face, some kind of medical expenses, then the insurance company which is going to pay your amount, of course, considers what is the amount that you have paid for your premiums, which is then given for your medical expenses. So you do not have to shell, you know a big amount of rupees, 10 lakhs, 5 lakhs, depending on whatever the condition is, and you are given that money by the insurance company. Correct? Similarly, like that is something called scholarship. Scholarship is given to students. While this scholarship is given by colleges, there is an amount kept by the colleges in the, it is saved by the colleges, so that when the student reaches, or kind of uh, gets that kind of marks, or he achieves whatever he is expected to achieve, then the college will give him the scholarship. Correct? And this amount is like you are paid an annual fee of your whatever education that you are taking. So this is called a scholarship. This is given, this that is why scholarship is not given to all the students. Scholarship is given to students who are able to achieve that level. Only those students are given the scholarship. Correct? Let's see what we have further. Correct? Now when we talk about annuity, okay, just imagine this is a father. Okay, so if this father takes an insurance, so this is a dad, all right, of kids, he approaches some insurance company that he wants to insure his kids. This father is going to insure his kids. When he is going to insure his kids, is he insuring the kids for today? Today the kids are small, they don't have a problem. Okay, it's absolutely fine. He doesn't need help today, but he is investing money for them for the future. So, if anything happens to the child, or any benefit of this amount that the father is going to give, or the benefit is to the kids, that means the kids are the beneficiaries. And who will pay the kids? The bank will pay the kids. Correct? We have the bank who will pay the kids. Correct? Or the investing company, whoever. This kind of companies, we call them as annuitator. Annuitator is the company who is responsible for making the payment of the annuity. Annuity is the amount which the kids will get. Correct? That is these. So the bank is called as the annuitator. Correct? The kids, these are the kids who are going to receive the amount, the people, the child who is going to receive the benefit of the dad investing for him, they are called as the annuitant. Annuitant is who? They are the beneficiaries. They are the beneficiaries. Correct? People who are benefited, kids who are benefited. Parents normally would invest for their children.
because the children are young, and for further education, for anything, for any X reason, okay, the parents will invest for the children. So the parents are investing, the father is investing, and so the father becomes the annuity holder. Correct. This particular insurance that will be taken by the annuity holder, the father, the parent, the guardian. They will take the annuity on the name of the child, and the child will be the beneficiary. Whenever the child needs the money, the annuitator, which is the bank or the investment company, or even if it is a single person, so to say, they will give that lump sum amount to the annuitant. Correct. Very interesting, right? A couple of things in which the annuity concept works very prominently. Okay, there are some special fields that we can look at. So they are the, you can say, the loan repayment. We all know, people take some fixed amount of loan and then you fix up some installment. Housing loan, some people need, for Indian rupees, if you talk about, suppose you need about 3 crore of rupees. Now if you do not have that amount of rupees, but yes, your income is such that if you part pay the money, you probably can get to reach to that level. Okay, then people take something called housing loan. Correct. And then the loan amount is repaid in certain installments. Correct. They are broken into small pieces, and for a couple of years, 20 years, 15 years, 10 years, 12, whatever is the time period, in that period the loan amount is paid. Correct. Then we also have something called the endowment fund. Correct. Now if you actually have to say what is an endowment fund, endowment fund is a fund which is created by investing an amount of money for a definite period of time, like maybe like scholarship. We can say scholarship is like an endowment fund, it is like a prize. Correct. In case of endowment, investment can be made by many people, or by single, you can invest by many installments, or by single amount. Like you think, I want to keep 5 lakh rupees away from my this thing, as if somebody is performing very well, they will get a benefit of rupees 5 lakhs. Or if you don't want to do that, you will say, I will be keeping 50,000 rupees every month, and finally it will be 5 lakh. Anybody who is beneficiary, who kind of is able to score that much or reach that level, fine, I'm going to give that amount to that person. So that is called endowment. Correct. Now pension is also a very common thing used. People work for years together, a part of their payment, a part of their salary, by the company, by the government, is kept into certain kind of savings, and after a particular tenure, when that person retires or he leaves the organization, he is entitled for some amount of fixed amount which he gets at the end of his tenure of working. That is called pension. Recurring deposit, again a very common concept. You will see recurring deposit being given to, you go and put some little money, and then it kind of increases. Correct. So when your money is growing day by day, your money is only piling up day by day, and one fine day when you withdraw the money, of course you're going to get this lump sum amount. Correct. Okay. Then next we have is the sinking fund. You all are commerce students and you know what sinking fund is all about. When you buy an asset and you know that the value of asset is sinking down. So what do you do there? You try to create a sinking fund. So the day the asset is of no use, you can use that fund to buy a similar type of asset, so that you can again keep your business running, and kind of help the business grow. Okay, so different type of annuities are there. Let us see what are the different type of annuities. So we have annuity certain, then annuity contingent, and perpetuity. Correct. Let me tell you first perpetuity. Perpetuity, it goes by the word. It is the perpetual. What is the meaning of the word perpetual? Perpetual means it is continuous. So perpetual annuity is a perpetual. Perpetuity means it is a perpetual annuity. Annuity certain again is divided into three parts. It's immediate annuity. Immediate annuity is a very simple method. It is also called as ordinary annuity. We will learn more about it. Okay, then you have the annuity due and deferred annuity. There is a slight difference in all of them. This is the immediate annuity is paid at the end of the month, at the end of the tenure. Annuity due is paid at the beginning of the tenure, and deferred payment has its own method. So we will see what each of them is divided into and how we can take it ahead.
So let's talk about the immediate annuity. See what is immediate annuity here? That this is the most basic type of annuity. If the payment of an annuity is made at the end of each specific interval of time, it is called immediate annuity or simple annuity, or it is also called as ordinary annuity. It is called as ordinary annuity. Correct? So let's take one example. Okay, there is this company called HDFC Life Insurance Saving. So suppose a person says that I can pay an amount of rupees 1 lakh per year. Every year he pays an amount of rupees 1 lakh. So what happens is, suppose this is the first year, second year, third year, let's mark this years, correct? And this payment, so in the first year he is going to pay what? He will be paying 1 lakh, correct? He pays a 1 lakh amount. Then again the next year he pays 1 lakh amount. Should I write the figure in this one? I think, okay. So the next year again he pays 1 lakh. Now during this tenure he has earned some interest, correct? So he will pay on a fixed date, he will pay another 1 lakh. But then his bank balance is going to be this plus the interest plus this. So that's how. Again on this period he will earn some interest. Now for the first year he is going to earn interest on this 1 lakh. But for the second year he will be earning interest on which amount? He will earn interest on this amount and the interest. So it's basically this will continue to go like this. That means what? That means for every year, if you see, every year at the end of the year, if he is putting in 10 lakh, will he get 10 lakh? Of course not. He will get more. Why more, boss? Because in this HDFC life insurance plan, every year he earns interest. And this will obviously be a compound interest because his amount is going to fall into his account. He is not going to withdraw that. It is going to keep on adding to it, correct? So if we invest in this fashion, it is compound interest, and at the end of it we will get a lump sum amount, which is our annuity, correct? So let's see now the next type of annuity that we have annuity due, where payment of an annuity is made in advance में कर दिया. रेंट है ना, यू आर स्टेइंग इन अ हाउस, तो पहले रेंट आपने पे कर दिया, घर बाद में महीना भर रहेंगे बाद में, तो हमेशा an annuity due is repeating payment that is made at the beginning of each period. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कब किया है? It is at the beginning of each period, such as the rent payment. It has to be, ये जो annuity due है उसका characteristics क्या है? All payments are in the same amount. रेंट आपका फिक्स्ड होता है जब तक, अज्यूमिंग दैट इट इज फिक्स्ड, करेक्ट? जैसे कि सीरीज ऑफ पेमेंट 500 है तो आप एक 500 का पे करते जाओ, करेक्ट? ऑल पेमेंट्स आर मेड एट द सेम इंटरवल, आप डेट चेंज नहीं कर सकते, करेक्ट? सो डेट नहीं चेंज करते. अभी अगर आपने मंथली प्लान लिया है तो आपको हर मंथ ही देना पड़ेगा. आपने ईयरली प्लान लिया है तो ईयरली करना पड़ेगा, करेक्ट? यू हैव टू फॉलो द प्लान. ऑल पेमेंट्स आर मेड एट what? All payments are made at the beginning of each period, such as payment being made only on the first day of the month. I think ये point मेरा repeat हो गया, never mind. Okay, now what happens is, now because payments are sooner under an annuity due, जल्दी करते हैं ना payment, then under immediate annuity, immediate में कब करते हैं? At the end of the period. और annuity due में कब करते हैं? At the beginning of the period. Where payments are made at the end of the period, an annuity due has a higher present value than ordinary annuity. That is why जबकि देखो annuity due ज़्यादा लोग प्रेफर भी नहीं करते. क्यों? क्योंकि पैसा पहले चला जाता है, गारंटी नहीं है, पैसा ले लिया और काम नहीं किया तो that is why. But ordinary annuity is more used, it is more prevalent because you first do everything, आपका पूरा साल हो जाने दो, आपका पैसा लॉक नहीं होता, करेक्ट? दैट इज व्हाट इट इज. सो बट इन बिजनेस द हायर द रिस्क द हायर यू अर्न. इन एन्युटी ड्यू आपका पेमेंट किया है, आपने पहले ही पेमेंट कर दिया है तो आपका रिस्क ज़्यादा है, इसके लिए उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आती है वो ज़्यादा होती है. वील सी व्हाट प्रेजेंट वैल्यू इज इन द नेक्स्ट टाइम. ओके, नाउ व्हाट डू वी हैव? द एन्युटी ड्यू कॉन्सेप्ट इज लेस कॉमन देन द ऑर्डिनरी annuity concept.
since most payments are made at the end of a period and not at the beginning. Annuity ordinary obviously safe है ना, you finish using the property, you finish using the services and then you pay, so that is safe, correct. Now example, annual rent paid for a property, payment for every year is paid at the beginning of the year assuming that the property will be used, है ना। आप लोग कोई भी अगर रेंट पे रहता है तो आप देखो, if you have to pay the rent for August, you have to pay the rent for August on the 1st of August, not on the 30th of August. You can't use the property first and then pay the rent. You have to pay the rent first and then use the property. आप जब होटल में जाते हो रहने के लिए, not a right example, but आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं पहले रह लूँगा और फिर मैं पैसा, नहीं, वो बोले कि एटलीस्ट थोड़ा तो पैसा आपको देना ही पड़ेगा, and then you have to pay a lot of portion of the amount before, correct। तो इसमें क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट है ये, बट यहाँ पर ये जो अमाउंट है आपका, इसमें भी आपको ये HDFC लाइफ प्लान का ही अगर हम लोग पहले का ही दे दो, ये इवन इफ यू बाय मिस्टेक रह गया, बट एनीवे इवन इफ यू कीप द सेम एग्जांपल दैट यू टेक, ओके, सो एवरी टाइम यू अर्न, अच्छा एंड में भी दिया, अगर एंड में दिया फिर भी यूज तो किया ना अमाउंट। सी लिसन, अगर आपने यहाँ पे 31 दिसंबर को एक अमाउंट पे किया, लेकिन 31 दिसंबर से लेके इसके 31 तक, 31 दिसंबर यहाँ 24 तक अमाउंट तो यूज़ करोगे ना वापस, बैंक विल यूज, बैंक यूजेज योर अमाउंट, तो वापस यहाँ पे सेम है, तो ऑल दिस पीरियड ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द इंटरेस्ट, यहाँ पे भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है, बट टाइम पीरियड आपका 1 ईयर माइनस करके आता है यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो ये फर्स्ट ईयर का, और कैलकुलेशन जब भी फॉर्मूला होता है तो दैट टाइम वी विल सी, करेक्ट, okay, so that is how the annuity due works, correct। okay, so let's see what is deferred annuity। deferred annuity क्या है। now deferred annuity, it's a very specific type of annuity which is a long term saving, okay, it's like a contract with some insurance company. I've said here an insurance contract, but it can be any agreement that you have either with the bank or anybody, where you start paying, which will not start paying immediately, okay, what investors will do, they can delay the payment, okay, through though during this particular time the earning on this are tax deferred, tax नहीं होता है इसके earning पर, यू कैन इंक्रीज द एन्युटी वैल्यू, आपने अगर कुछ आज अमाउंट डाला और आपको लगता है कि ये अमाउंट कम है तो आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हो, ओके। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज दैट यू कैन विड्रॉ, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए डालने का है, मुझे विड्रॉ करना है, ज़रूरत है मुझे, तो यू कैन यूज इट। आई मीन द मोस्ट कॉमन डेफर्ड एन्युटी is a retirement fund where the investor is not yet ready to retire, they defer their withdrawal, मतलब जो भी payment होता है, until they retire. Now in the meantime what happened, the fund earns interest, the fund will continue to earn interest as the investor withdraws money from the fund। मतलब अगर आपने आज आपके पास 10 लाख रुपया, आपने 10 लाख रुपया डाल दिया, आपने फिर 10 साल तक कुछ भी नहीं डाला, कोई बात नहीं, आपको वो 10 साल तक आपको उसका 10 for 10 years you keep on getting interest on that on 10,000 on 10 lakhs, correct। तो this is a very commonly used retirement plan, लोगों को जब when people are working they have the money, so when they have the money वो डाल देते पैसा, अब जब उनके पास when they don't have the money, when they retire, जब उनकी रेगुलर सैलरी नहीं आती है, तो ये deferred payment जो होता है वो उनको एक टाइम पीरियड के बाद दे कीप ऑन गेटिंग दी अमाउंट। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि आपका एक लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान है, 10 साल तक आपने सोचा कि आपने एक डेफर्ड पेमेंट 10 साल पहले ही आपने सोचा कि मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है, ओके, दिस इज अ लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो यहाँ पर यू हैव पुट इन अ मनी ऑफ से 10 lakhs, उसके बाद आपने पैसा अंदर डाला ही नहीं, नथिंग, तो एवरी ईयर क्या होता है, इंटरेस्ट मिला, यहाँ पे इंटरेस्ट मिला, यहाँ पे इंटरेस्ट मिला, यू कीप ऑन अर्निंग इंटरेस्ट, करेक्ट, आपका इंटरेस्ट जमा होता जाता है पूरा, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग, ओके, यू आर डिफरिंग द पेमेंट बट यू आर अर्निंग इंटरेस्ट। बीच में आपको चाहिए तो यहाँ पे आपने 2 लाख रुपए निकाला तो 8 लाख पे आपको चाहिए तो आपने वापस 4 लाख यहाँ पे डाला, यू कैन कीप ऑन एडिंग मनी और विड्रॉइंग मनी according to your convenience in the deferred plan, correct, and then you keep on you don't it is not compulsory कि आपको कुछ पे करना है, आप कुछ भी ना करो, ट्रांजैक्शन पड़ा रहने दो ये पैसा, this money will keep on getting you interest there, correct। now what happens after a certain period of time, okay, यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो जाता है, फिर 1 साल का गैप जाता है, जैसे कि ये 10 साल, 11th ईयर के बाद क्या होता है, ये जो है ये टाइम पीरियड में
until certain amount of time. Okay, ये निकाल दो. Okay, until certain amount of time, what will happen? You will keep getting this time period. The investor will get a constant payment every year और मंथ, डिपेंडिंग क्या आपने कौन सा प्लान लिया है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा. करेक्ट. और ये क्या है? दिस इज व्हाट, दिस इज योर डेफर्ड पीरियड. यहाँ पे आपने एक भी पैसा नहीं दिया है, ये पीरियड आपने डेफर किया है. करेक्ट. द मोस्ट कॉमन डेफर्ड पेमेंट आपको पता है क्या है? वो है स्टूडेंट लोन. इन केस ऑफ अ स्टूडेंट लोन, द स्टूडेंट डेफर्स रीपेइंग द लोन until after they have finished school. अगर आपको अब्रॉड जाना है कहीं पे भी, इफ यू वांट टू गो फर्दर फॉर एजुकेशन, देन व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस केस दैट एनी गवर्नमेंट और बैंक, ओके, दे विल नॉट चार्ज यू इंटरेस्ट ड्यूरिंग दिस डेफर्ड पेमेंट. मतलब कुछ कुछ कंट्रीज में चार्ज नहीं करते, कुछ कंट्रीज में करते, इंडिया में करते थे शायद. नाउ इफ द लोन इज ग्रांटेड बाय अ बैंक और बाय एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन द स्टूडेंट गेट्स द स्टूडेंट हैज टू पे सम चार्ज. अगर गवर्नमेंट से लोन लिया है तो स्टूडेंट डज नॉट पे द चार्ज. ओके, बट वो स्टूडेंट लोन रीपेमेंट कब चालू करता है? द स्टूडेंट विल स्टार्ट पेइंग द लोन आफ्टर मे बी से 18 मंथ्स या 20 मंथ्स, जब उसका उतना एजुकेशन हो जाता है कि वो खुद अर्न करके ही कैन रीपे द लोन. करेक्ट. तो स्टूडेंट लोन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड एन्युटी. करेक्ट. Okay, then we have annuity contingent, which is when some terms and conditions are given by the company, by the bank, by the government, whoever is going to who is going to give the money to the beneficiary. The beneficiary has to give some documents, some conditions are applied, और तब जाके आपको वो पैसा मिलता है. Correct. And then we have the perpetuity. क्या है perpetuity? It is an annuity in which the periodic payment begins on the fixed date and continues indefinitely. ऐसे savings होते हैं जहाँ पे आप पैसा डालते हो and then you keep on getting the money for a long period of time. Perpetuity is continuous. You continuously keep on getting that money. Correct? Okay. Now what we are going to do is, यहाँ तक तो ठीक है. Let us see formulas involved in this. Okay, and then we will do some sums based on the formulas. The first formula we have here is about the annuity, ordinary annuity का formula है ये. Okay, where M और SN is equal to A by I into 1 plus R raised to N minus 1. तो amount A क्या है? आपकी annuity. M और SN जो भी है वो क्या है? amount of immediate annuity. I is your rate of interest. And N जो आपका है, that is the number of years you have or the time period for which you are going to keep the investment. Correct. So let us see one example here. Correct. Calculate the amount of an immediate annuity of rupees 1000 for 15 years if the rate of interest is 4.5 per annum. तो क्या करेंगे यहाँ पर? देखो, let us do it. So what is given to you? Your annuity given to you is 1000. Correct. N कितना दिया है? N is equal to 15 years. And आपका rate of interest कितना दिया है? R is equal to, R मतलब क्या है? हमने बोला था अभी R क्या है यहाँ पर? R is I. Correct. तो I'm going to write down I, which is equal to rate of interest. वो कितना है? It is 4.5%. तो हम उसको 4.5 by 100 if you put it, so this will become 0.45. The time period is more. We are going to use a logbook to solve this. तो we will put this in the formula. Formula हमारे पास है ना, देखो, m into. तो what are we going to do here? Let's put up a small line. Okay, so m और s formula के हिसाब से we will see. So we are going to say it is equal to m is equal to, आपका a कितना है? A is 1000 divided by 0.045. Yeah, this is going to be 0.045. Wait 1 second. 0.045. Okay, and then you have 0.045 into bracket 1
प्लस फॉर्मूला को देख देखे आई क्या है अपना, इट इज 0.045, दिस विल बी टू द पावर 15 माइनस 1। तो इसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, विच विल गिव यू व्हाट, m इज इक्वल टू 1000 बाय 0.045 इंटू ब्रैकेट, अगर इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा कितना, 1.045 टू द पावर 15 माइनस 1, करेक्ट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यू कैन फाइंड आउट द लॉग हियर। देखो लॉग ऑफ, ओके, ये जो इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू दिस, आई विल शो यू हाउ टू फाइंड इट विथ लॉग। ओके, लेट अस से द वर्किंग कैसे करेंगे उसको, वी विल से लेट x इक्वल टू 1.045 to the power 15, correct। तो that means log x is equal to 15 log, यहाँ पे आपको log के रूल्स पता होने चाहिए, अगर वो नहीं पता है तो शायद वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। सो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, इसके log की वैल्यू आप अगर log बुक यूज़ करते हो तो आपको पता चलेगा कि log of 1.045 is going to be 0.0191, correct। if you multiply this you will get it will be 0.2865। अच्छा, तो आपको क्या करना है, तो दिस इज द वैल्यू दैट यू विल गेट, करेक्ट। दैट मीन्स आपको अगर ये वैल्यू निकालनी है, इफ यू वांट टू फाइंड m, ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू हियर, सी 0. इसका एंटीलॉग निकालना पड़ेगा आपको, करेक्ट, टू फाइंड आउट, सी यू गॉट दिस एज log x, यू नीड द वैल्यू ऑफ x, करेक्ट। आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू एंटीलॉग। सो वी विल राइट डाउन लाइक दिस, वी विल से x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 0.2865। अगर आप उसका एंटीलॉग निकालोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 1.934। ये जो 1.934 है, दैट यू आर गोइंग टू पुट इट अप हियर, करेक्ट। सो नाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन दिस, आपका भी हो जाएगा, सम विल गो लाइक दिस फर्दर, इज इक्वल टू 1000 by 0.045 into bracket, you will put this value there, which is equal to 1.934 minus 1, correct। now आप उसको कैलकुलेट करो आपके हिसाब से, तो that will be how much, if you open this, इसमें से 1 जाएगा तो it will be 0.934, so it will be 1000 into 0.934, you have to divide this by 0.045, correct। ये आपको समझा है शायद, मैं इसको आई एम गोइंग टू इरेज दिस आउट बिकॉज आई नीड द स्पेस, करेक्ट। तो लॉग बुक यूज़ करके आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, विदाउट लॉग बुक पॉसिबिलिटी कम ही है, कितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ा फिगर आ जाएगा, सो दैट इज़ वाई यू नीड अ लॉग बुक। ओके, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, 0.45, तो देन m इज इक्वल टू इफ यू मल्टीप्लाई दिस, ये करो तो जरा मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा, तो ये दिस विल बी 934, तो 934 ये 1000 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेट अस सी, सो दिस इज 934 इंटू ये 1 2 3 एंड यू डिवाइड दिस बाय 45, तो 45 मतलब 45 2 ज़ा 90, इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, 934000 एंड वी डिवाइड दिस बाय 45, 45 2 ज़ा 90, 3 4 नहीं जाएगा 0, ब्रिंग डाउन 0, दैट्स इक्वल टू 4 8 ज़ा 32, 4 7 ज़ा कितना आएगा, 7 4 ज़ा 28 एंड 28 प्लस 315, ये कितना आएगा, 4 minus 2 will give you, so 4 minus 2 will give you a 2, और यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 0,
So this is going to be 5s are, which is going to be 5 4s are 20 and 22 25, करेक्ट 225. तो यहाँ पे आएगा दूसरा 25 और आपको आएगा नीचे वापस 5, वापस यहाँ पे आएगा 250, सॉरी 225. तो फिर अगेन 0 तो नहीं जाएगा पॉइंट, तो ये 5 कंटिन्यू होता रहेगा, करेक्ट. तो 20755.55, सो 20755.55. ये कैलकुलेशन मैं इरेज कर देती हूँ, आप लोग सेपरेटली करके रखना उसको, करेक्ट. 20, आई राइट द हैंड राइटिंग लिटिल बेटर. ओके, तो ये हमारा आंसर है. क्या है आंसर अपना? m इज इक्वल टू 20755.55. इसको चाहिए तो आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो, तो ये इरेज कर देते हैं. आई जस्ट रोड इट सो दैट आई डोंट फॉरगेट इट. उसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो क्योंकि 55 इज मोर, तो राउंडिंग ऑफ, करेक्ट, राउंडिंग ऑफ अगर करोगे उसको तो यू कैन राइट इट एज m इज इक्वल टू 20756, करेक्ट. इतना, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट, हेंस द रिक्वायर्ड. सो क्या बोल सकते हैं हम लोग? हेंस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द गिवन एन्युटी is so much. This is equal to what? It is the required amount of the given annuity, correct, of the given annuity. Perfect. तो ये काफ़ी आसान है समझने में. आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. कैलकुलेशंस है और कंपाउंड इंटरेस्ट से ही चल रहा है, इफ यू कैन सी, करेक्ट. ओके ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. ये एग्जांपल हमारे पहले फॉर्मूला के साथ ही है. आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूलाज हियर फॉर रेफरेंस सो दैट यू नो वी कैन यूज देम. तो द क्वेश्चन इज फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी इफ पेमेंट ऑफ ₹500 इज मेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर for 10 years at the rate of 8% per annum compounded annually. Okay, देख लेते क्या है. Okay, तो what is given to us? Let us see what is given to us. It is given is A is equal to 500 and we have our I, which is our interest part, which is 8%, that is 8 by 100, but it is paid quarterly, so we will multiply it by 4, which will be what? 0.08 by 4, which will be take you to 0.02, correct. N is equal to 10 years. N had 10 years लेकिन क्वार्टर, सो 10 years को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? इट विल बी 10 into, it will be 10 into, every year will have 4 quarters, so 10 multiplied by 4, it will become 40. तो our n is 40. Now let's start the working here. क्या करेंगे? This is m जो अपना अमाउंट है is equal to 500 divided by 0.02 into bracket 1 plus 0.02 to the power 40 minus 1, correct. So here your this thing will become m is equal to 500 by 0.02 into bracket, this will become 1.02 to the power 40 minus 1. तो आपको याद है ये log का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो दैट वर्किंग वी विल डू इट हियर. कौन से कलर में? ओके, सो दिखता नहीं है ना ये कलर. ओके, 1 सेकेंड ना. तो लेट अस डू द log कैलकुलेशन. As usual, we have to only calculate that amount, so we will say let x equal to 1.02 to the power 40. So therefore we can say log x is equal to, taking log both the sides, we will have 40 log of 1.02, correct. अच्छा, तो 02 का log कितना आएगा? 10 का log 2 की कॉलम में, that is 0. So this is equal to 40 into 0.0086, correct. So this is your log x. That means
log x की वैल्यू कितनी आएगी, log x you will get this if you multiply 4 8s are 32 and this is equal to 24 344, correct. It will be 0.344, correct, क्योंकि 40 है ना ये, and then you will multiply okay. So डेसिमल का भी देने का है, 1 second, 8 4s are 32 and 4 6 are 24, correct, and ये लगेगा एक 0, so 1 2 3 4, correct, yeah, so this is 3 to 4, 0.44. Alright, now to find out x we will have to find out the anti-log. We have to find out the anti-log of 0.344. I hope all of you have the log table. log table का यूज़ करो, अगर आप करोगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 2. ये 3 है, 3 का इंटीजर आएगा 2.2080, correct. This is your x value. So we will continue with our calculations now. तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन, okay, so that means now you can write down m is equal to 500 by 0.02 into bracket, देखो ये this is 2.2080 minus 1, करेक्ट. ये ब्लू वाला पार्ट अभी मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि आपको कैलकुलेशन आप लिखो, I will need the space, ठीक है. तो you can then माइनस का कितना आएगा, ये करो तो आगे जब तक मैं बोर्ड इरेज कर रही हूँ. सो एंड देन यू कैन चेक द आंसर. तो फिर m इज इक्वल टू 500 बाय 0.02 इंटू दिस इज गोइंग टू बी 1.2080, करेक्ट. तो we will have our amount will be 500 into 1.2080 divided by 0.02. ये कैलकुलेशन आप जब भी करते हो तो let's see it will be 500 into 12080 into 100 divided by 2 into 1 2 3 4. तो ये 2 0 निकल जाएंगे, ये 2 0 निकल जाएंगे, ये और ये निकल जाएगा, ये और ये निकल जाएगा. दिस इज 2 1 2 2 6 2 0 0 4 0. ओके, तो 6 5 कितना आएगा 30, 6 5 30 and 6 4 20 और ये 200, करेक्ट. दिस इज द अमाउंट, हेंस द रिक्वायर्ड अमाउंट. दिस इज द रिक्वायर्ड अमाउंट. ये आपका आंसर है, करेक्ट. आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट, ठीक है. चलो, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आई थिंक कैलकुलेशंस ही है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द लॉग बुक कैलकुलेशंस एंड यू हैव टू नो हाउ टू रीड द लॉग टेबल. वो तो आपको आ ही गया होगा, पूरा चैप्टर है अपना इसके ऊपर, ठीक है. तो ये एक और एग्जाम्पल है. आई एम गोइंग टू कीप द फॉर्मूलाज देयर. क्या है देखो, टू सेव फॉर अ चाइल्ड्स एजुकेशन a family decided to invest rupees 4,000 at the end of each 6 months in a fund paying 8% interest compounded semi-annually. Semi-annually मतलब क्या, 2 बार, correct. Semi-annually. Find the amount of investment at the end of 18 years. क्या करेंगे हम यहाँ पर, investment period या फिर क्या, A क्या है अपना, what is our A? A 4,000, क्योंकि वो अमाउंट हमको इन्वेस्ट करनी है ना एक टर्म के लिए, जो अपना टाइम पीरियड है उसके लिए. दिस इज इक्वल टू ₹4,000. ओके, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 18 ईयर्स है. 18 ईयर्स, लेकिन 18 ईयर्स इट इज गोइंग टू बी 6 मंथली, सो दिस इज गोइंग टू गिव 36, करेक्ट. एंड योर इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट आपका 8% है, करेक्ट. It is equal to 8% interest, that is 8 by 100, but it is semi-annually, so 2. So ये अगर कट करोगे it will be 4, so that will be 0.04.
तो आपका सारा भी रिक्वायर्ड डेटा आपके पास आ गया है और आपको करना ही नहीं है कुछ अभी। फटाफट फटाफट, यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी टू डू इट, अब फटाफट यू हैव टू स्टार्ट कैलकुलेटिंग दी एम पार्ट। करेक्ट, एम का हमको फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट सब्सटीट्यूट द अमाउंट। सो एम इज इक्वल टू ए बाय आई। ए क्या है 4000, आई क्या है आपका 0.04 इंटू 1 प्लस 0.04 टू द पावर 36 माइनस 1। ठीक है, अब आपको पता ही आगे करना क्या है, आई डोंट थिंक मुझे बताने की भी ज़रूरत है। सो दिस इज गोइंग टू बी 4000 बाय 0.04, यहाँ पे आएगा 1.04 टू द पावर 36 माइनस 1। अभी फटाफट लॉग कैलकुलेट करते हैं इसका। ओके, सो x इज इक्वल टू 1.04 to the power 36, so we can say log of x is equal to 36 log 1.04. तो okay, so that means log of x is equal to 36 into 1.04 का log आप निकालोगे तो 10 के 4 कॉलम में it will be 4 0.0170 आता है, वो 0.0170। करेक्ट, सो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 36 इंटू 0.07, तो 36 7 जा तो 117, 36 इंटू 17 करते हैं, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21 एंड 6 तो करो ये 27 एंड ये आएगा 42 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 6 प्लस 1 3 2 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6 एंड 1 एंड 2 और यहाँ लगेगा डेसिमल 0.612। करेक्ट, 0.612। करेक्ट, ये आपका आंसर आएगा। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड आउट x के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू फाइंड आउट द एंटी लॉग ऑफ 0.612। तो इसका एंटी लॉग कितना आएगा, x का एंटी लॉग ये 3 है तो ये आएगा 4.61 एंड 093। करेक्ट, ओके, तो यू गॉट दिस फिगर नाउ। करेक्ट, तो नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस फर्दर। So now you have your m which is equal to 4000 by 0.04। ये 0.04 को सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग, ये कितना आएगा देखो 4000 इंटू 100 बाई 4। करेक्ट, तो ये कट करोगे तो आपको ये कितना आएगा, इट विल बी 1000 और 1000 इंटू दिस, तो बहुत बड़ा अमाउंट आता है, रखे उसको ऐसे ही, जगह ज़्यादा लगेगी। ओके, सो देन यू कैन राइट डाउन इनसाइड व्हाट दिस विल बी 4.093 minus 1. So this will be m is equal to 4000 by 0.04 into bracket 3.093. So this is going to be m is equal to 4000 into 3.093 by 0.04। अभी आप कैलकुलेशन करके देखो, यहाँ पे 1 लाख आता है एक्चुअली, ये कट करके। करेक्ट, देखो ये ऊपर लोगे आप तो इट विल बी m इज इक्वल टू 4000 इंटू इसका आप 100 से मल्टीप्लाई करो इंटू 3093 और इसको आप डिवाइड करो 4 इंटू 123, तो कट करते हैं 1 2 3 1 2 3 और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। दिस विल बी 309300, ये आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है। Correct, amount of annuity. This is your amount of annuity. Correct, this is your final answer. I hope you are getting it. Correct, चलो अभी formula 2। formula 2 क्या है, formula 2 is when you have to find out the annuity due। annuity due का formula है, ये क्या है करेंगे उसको देखो, यहाँ पे ये formula है आपका, इसको यूज करेंगे हम। ओके, लेट्स सी, एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ड्यू, annuity due of rupees 1500 per year for 10 years at 5% per annum compound।
इंटरेस्ट। कैसे करेंगे इसको, पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है, सो दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सम बेटर। करेक्ट, ए क्या है हमारा, ए इज आवर 1500, करेक्ट, 1500 रुपीज। देन व्हाट यू हैव, एन क्या है, एन इज इक्वल टू 10 ईयर्स, करेक्ट। अब मैं लॉग का कैलकुलेशन नहीं बताऊंगी, आपको पता होना चाहिए लॉग करना पड़ता है, तो कितने बच्चों को लॉग आता है नहीं आता है, सीखो जाके, एकदम बिगिनिंग ऑफ द लेसन ही है ये, करेक्ट। आपका आर एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना दिया है 5%, दैट मीन्स अगर आपको आई आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट विल बी 0.05, आपको एम ढूंढना है। एम का फॉर्मूला है हमारे पास क्लियरली, तो वी विल डायरेक्टली यूज दैट फॉर्मूला। वाइट दिखता है क्या, दिखता है, ओके। सो व्हाट इज दैट वी विल डू, एम इज इक्वल टू, एम इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस, देखो 1 प्लस आई, 1 प्लस आई कितना आएगा, दैट विल बी 1 प्लस 0.05 मल्टीप्लाइड बाय अपना जो पुराना फॉर्मूला था 1500 बाय 0.05 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 0.05 टू द पावर कितना आएगा ये, टू द पावर 10 माइनस 1, करेक्ट। ओके, सो लेट्स फिगर आउट, यहाँ पे m इज इक्वल टू ये कितना, दिस विल बी 1.05, करेक्ट, लेट्स ऐड दिस, सो दिस विल बी 1.05 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना आएगा, दिस विल बी 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5, विल बी 300, तो आएगा 30,000, करेक्ट। तो आपको ऐसे रखना है तो ऐसे रखो, आई थिंक आई प्रेफर कीपिंग जस्ट बिकॉज मेरा हॉरिजॉन्टल स्पेस ज़्यादा जाता है, सो आई थिंक दैट्स फाइन विथ मी, जस्ट कीप इट लाइक दिस, ठीक है। ओके, नाउ इनटू ब्रैकेट दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस 0.5 रेज टू 10 माइनस 1। अब इसका लॉग कैलकुलेशन करना है, फटाफट कर लेते हैं, करेक्ट। सो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1.05 टू द पावर 10, therefore log x is equal to 10 log 1.05, तो log x is equal to 10 इंटू 1.05 का कितना आएगा, चेक करो लॉग बुक, वो आ रहा है आपका 0.0212, करेक्ट। सो log x कितना आया आपका, इट इज़, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इट जीरो सिर्फ शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी 0.212, सो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू इट विल बी एंटी लॉग ऑफ 0.212, एंटी लॉग बुक चेक करना सब लोग, तो ये 3 ओके, तो ये कितना आएगा आपका, ये 0 निकल जाएगा, 0 तो ये 1 आएगा, 1.629, करेक्ट, 629 सॉरी, करेक्ट। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे इस वैल्यू को हम लोग, सो m इज इक्वल टू 1.05 इंटू 1500 बाय 0.05 इंटू ब्रैकेट 1.629 माइनस 1। सो अभी पूरा का पूरा कैलकुलेट करते हैं कि m इज इक्वल टू, बेटा क्या गड़बड़ हो गया, हाँ, इट्स इक्वल टू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1500 इंटू 0.629 डिवाइडेड बाय 0.05। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आई विल इरेज दिस आउट, तो कैलकुलेशन यहीं पे करूँगी, ठीक है। डेसिमल ऊपर नीचे करके आई थिंक सारा दिखता ही है कि कैंसिल ही हो रहा है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन तो गड़बड़ है ही नहीं वैसे भी। सो लेट्स सी, सो m इज नाउ इक्वल टू 105 इंटू 1500 इंटू 629, करेक्ट। दिस यू विल कैन डिवाइड बाय, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअली यू कैन जस्ट रिमूव द 0, तो 100 आप निकाल सकते हो, देखो इसका पॉइंट और इसके पॉइंट के साथ निकल जाएगा, एंड नाउ यू कैन हैव दिस एज 5 मल्टीप्लाइड बाय जस्ट 1000 इसका, करेक्ट।
तो 1 2 3 नो नो रुको, ओके 1 2 3, ओके 1 2 निकल जाएगा, 1 2 निकल जाएगा, देन दैट्स इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फटाफट, और एक डेसिमल आएगा बाद में क्योंकि नीचे 10 है। सो 103 मतलब 315, दैट्स 315 मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 315 इंटू 629, 6 3 ज़ा 18, then it is 3 2 ज़ा 6 and 6 1 ज़ा 6, that's 12, 6 5 ज़ा 30, 9 3 ज़ा 27 और 2, तो that equal to 59, then we have 9 और 5 2 ज़ा 10, that's equal to 19 and 9 5 ज़ा 45, कितना आएगा ये देखो, ये 5 है आपका, तो this is going to give you 1 9, 5 plus 2 7, 7 plus 1 8 and 9 plus 1 10 plus 1 11, और ये आएगा 3 और 0.5 आएगा आपका आंसर। पॉइंट क्यों? क्योंकि आपका 10 है, इसके लिए मैंने पॉइंट कंसिडर किया। 19813.5 करेक्ट। सो 19813.5, सो इट्स गोइंग टू बी 1919835 बाय 10 आपका m है। फाइनल आंसर आपका आएगा 19813.5 करेक्ट। ये क्या है? दिस इज द अमाउंट एन्युटी ड्यू, दिस इज योर एन्युटी ड्यू। हमने अभी तक जितने भी सम्स किए हैं, ओके, जो फॉर्मूलाज यूज किए हैं, ओके, कुछ एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन हियर, यूज दोज फॉर्मूलाज एंड ट्राई टू सॉल्व दिस सम्स बाय योरसेल्फ। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट दिस टॉपिक वेरी इजीली। ओके, थैंक यू so much guys, see you all in the next class, bye bye yo।